Since we are in history, I want to ask you a somewhat personal question. If you don't want to answer, this is your father's assassination. This, for me, of course, it looms big in my head. 1991, May, right? I hope I'm getting that right. You were 20 or 21 years old. I just want to know, 20, yes. How did that affect you? Did you feel like throwing in, or did you feel the resolve that you want to take up the cudgels? Well, I mean, at one level, my father was assassinated, and it's violent, and it's sort of painful. But at another level, it's losing a parent. So many people lose parents. For me, at that time, I saw my father fighting forces that were much bigger. And I sort of sensed before my father died that this was not going to end well. So what was worse for me was actually seeing my father walking towards his death. That was much worse than the death, in fact. In fact, when my father died, they told me on the phone, I said, oh yeah, okay, so I know now it's happened. So it was almost a fait accompli that, okay, it had to happen, it's happened now. But the disturbing aspect was watching him fighting these forces and knowing as a son that he's not going to come out of this thing. It shaped me fundamentally. I didn't realize it then. Certain things my father said to me just got sort of stamped in my head. So I remember once my father told me in a conversation that, you must really think about things deeply. And I didn't realize it then, but it stuck. So I would spend quite a lot of time thinking about stuff. And that was one aspect. Other aspect was going to the United States. There was a security threat there. I had to sort of live under particular circumstances, security and stuff. So I had these long periods of where I was on my own, in a sense. So I had developed the capacity of reflection on my own, just sort of going for walks and thinking about stuff. So that was a positive. Yeah. Thank you. I feel Look, I'll tell you, it was very, very painful for me. But it also gave me many, many gifts that I would never have got. It made me understand violence. It made me understand the other. So I remember, it's a strange thing, I saw my father's killer lying on the beach in Sri Lanka. And I felt very, very bad for him. I just was very upset for him. I was like, I just saw him, that's my father. He's somebody else's father. There's somebody else looking at him right now the same way I looked at my father. Right? So when someone talks violence, I sort of sit quietly and I say, you don't actually understand it. That's why you're so enamored by it. It's never actually struck you. And when it does, you'll have a different view on it. So that type of thing does exist. Yeah. No, so overall, it's a positive. I don't know, positive and negative. I mean, when Prabhakaran died, I picked up the phone, I called my sister and said, Priyanka, this is very strange. She says, what? I said, I'm feeling very bad. Like, I should be feeling happy about this. And I'm just disturbed that why are they humiliating this man like this?
What is the reason for humiliating him like this? And my sister says to me, Rahul, I'm feeling exactly the same way. Now, saying that to somebody who hasn't dealt with violence, you won't understand it. You'll be like, good that he's dead. But to me, that doesn't work. Having faced nothing similar, I actually understand, because for me, empathy is such an important human quality. And I feel what you said just now will be reassuring to people in different situations who have had to take on. And as you said, just the death of a near person, I mean, even if it's by another cause, a natural cause, it is that. For a couple of years, I was angry. I was angry with who I thought killed my father. Right? And it was, I didn't realize it, but it was a weight on my shoulders. It literally was a weight on this anger was a weight on my shoulders. And then one day I was like, Rahul, why are you carrying this around? There's no reason for you to carry this around. Put it down. And literally I just put it down. And that was it. I sort of understood then that actually one person didn't kill my father. Set of forces combined, and my father happened to be fighting for a cause that was against those forces. So if you view it like that, then compassion is automatic. हाल ही में राहुल गांधी ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कौशिक बसु के साथ जूम इंटरव्यू दिया। जब उस इंटरव्यू में उनसे उनके पिताजी यानी राजीव गांधी के हत्या के बारे में पूछा गया, तब राहुल गांधी ने बताया कि वो घटना मेरे लिए बहुत पेनफुल है, बहुत त्रासदायक है, मुझे बहुत पीड़ा देने वाली घटना है, क्योंकि उस समय मेरी उम्र सिर्फ 20 साल थी और 20 साल की उम्र में मैंने ये जो देखा था, ये मैंने सहा था, ये बहुत पीड़ा देने वाला था। और मैं ये जानता था कि मेरे पिताजी जिन जिन शक्तियों के साथ लड़ रहे हैं वो बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं, और उन शक्तियों के साथ लड़कर जो अंततः फाइनल रिजल्ट आने वाला है वो बुरा ही रहने वाला है, ये मुझे पता था। ये राहुल गांधी ने कहा था। मतलब एक तरीके से वो ऐसे कह रहे कि उनके पिताजी की हत्या होने ही वाली, ये उनको अंदेशा आ गया था, क्योंकि उनके पिताजी ऐसी शक्तियों के साथ लड़ रहे थे जो बहुत बड़ी थी, जिनकी ताकत बहुत बड़ी थी, और वो शक्तियाँ उनके पिताजी की जान लेगी, ये वो समझ रहे थे। और जैसे ही उनके पिताजी की हत्या हुई और उनको फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि चलो अब फाइनली ये हो गया है, जिसका मुझे बहुत सालों से इसका अंदेशा हो गया था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उस घटना ने, यानी उनके पिताजी की हत्या की घटना ने उनको बहुत सिखाया है, और दो सबसे महत्वपूर्ण बातें उस घटना ने सिखाई है। पहली बात है हिंसा। उन्होंने यह समझा कि हिंसा क्या होती है, यह उनको इसी घटना से समझ में आया। और दूसरा है दूसरों को समझना, यानी दूसरा क्या सोचता है उसके बारे में समझना। ये दोनों बातें राहुल गांधी को किस घटना ने सिखाई? उनके पिताजी की हत्या की घटना ने उनको सिखाई। उन्होंने ये भी कहा कि जब वो श्रीलंका गए थे तो उन्होंने उनके पिताजी के हत्यारे यानी LTTE के प्रमुख प्रभाकरण को उन्होंने श्रीलंका के बीच पर आराम करते हुए, सोते हुए देखा था। और राहुल गांधी ने कहा कि उसको देखकर मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगा, उसके लिए वो बहुत अपसेट हो गए, क्योंकि जैसे मैं अपने पिताजी को देखता था वैसा वो भी प्रभाकरण किसी का पिताजी होगा, और कोई लड़का उसके तरफ भी मेरे पिताजी ऐसे ये करके देखता होगा। तो उन्होंने उस प्रभाकरण के लिए बहुत बुरा फील किया। यानी ये राहुल गांधी की सोच कह लीजिए या उनका ग्रोनअप कह लीजिए, जैसे वो ब्रॉटअप किए गए, जैसे उनका पालन पोषण किया गया है, वो कितने अच्छी तरीके। राहुल गांधी की जगह और कोई दूसरा व्यक्ति होता, वह अपने पिताजी के हत्यारों को देखता तो ऑब्वियसली वो यही रिएक्शन देता, मेरे पिताजी के हत्यारों को भी मार डालना चाहिए उसी तरह से। लेकिन राहुल गांधी के मन में ये विचार नहीं आया। राहुल गांधी के मन में ये विचार आया कि इसकी परिस्थिति कितनी बुरी है, मैं जैसे मेरे पिताजी को देखता था तैसे इसका बेटा इसकी तरफ देखता होगा, और उसका बेटा ये कहता होगा कि ये तो एक हत्यारा है, ये तो एक खूनी है। तो राहुल गांधी ने उसके लिए भी बुरा फील किया। और जब उन्होंने प्रभाकरण की हत्या की न्यूज़ पढ़ी, राहुल गांधी के पिताजी यानी राजीव गांधी के हत्यारे थे, तो उन्होंने उनकी बहन प्रियंका गांधी को फ़ोन किया, और उन्होंने उनकी बहन प्रियंका गांधी को कहा कि यह खबर सुनकर मुझे आनंद होना चाहिए, मुझे हैप्पीनेस होनी चाहिए, लेकिन मुझे हैप्पीनेस नहीं हो रही,
मुझे बुरा लग रहा है। तो उनकी बहन प्रियंका ने कहा कि जी हाँ, मुझे भी हैप्पीनेस होनी चाहिए, मुझे भी आनंद लगना चाहिए कि अपने पिताजी राजीव गांधी के हत्यारे अब मारा गया है, लेकिन उसके लिए मुझे आनंद नहीं हो रहा है, उसके लिए मुझे हैप्पीनेस नहीं हो रहा है, उसके लिए मुझे और बुरा लग रहा है। तो राहुल गांधी ने यही कहा कि जिसने हिंसा देखी है, जिसने हिंसा एक्सपीरियंस किए, जिसने हिंसा नज़दीक से देखी है, उसको सामने वाला व्यक्ति जिसने अपने पिताजी की हत्या की है उसके मरने के बाद भी आनंद नहीं हो सकता, क्योंकि हिंसा कितनी भयानक होती है और हिंसा से कितना नुकसान होता है ये उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। और उनका यही कहना है कि जिसने हिंसा एक्सपीरियंस की है, जिसने हिंसा नज़दीक से देखी है, उनको अपने पिताजी के हत्यारे के मरने की खबर सुनने के बाद भी आनंद नहीं होगा, ये राहुल गांधी ने कहा है। राहुल गांधी कितने अच्छी तरीके से ब्रॉटअप किए गए, कितने अच्छी तरीके से उनका पालन पोषण किया गया है, अपने पिताजी के हत्यारे के बारे में भी वो ज़्यादा बुरा नहीं सोच रहे। और उसका रीज़न भी उन्होंने बताया, क्योंकि उन्होंने हिंसा देखी है, उन्होंने हिंसा एक्सपीरियंस की है। उनकी दादी जी इंदिरा गांधी जी की भी हत्या हुई थी, वो भी हिंसा उन्होंने एक्सपीरियंस की है। और अपने पिताजी की हत्या भी उन्होंने देखी है, उनके पिताजी के तो टुकड़े टुकड़े लाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया था, इतनी बुरी अवस्था थी। तो ये सब बातें देखकर राहुल गांधी और सब लोग यही कह रहे हैं कि हिंसा बुरी चीज़ होती है, हिंसा अच्छी चीज़ नहीं होती है। और अपने पिताजी हत्यारे को देखने के बाद भी उनके मन में उसके लिए क्रोध पैदा नहीं हुआ, उसके लिए उनके मन में एक प्रकार से हिंसा पैदा ही नहीं हुई, क्योंकि वो हिंसा देख चुके थे। तो ये राहुल गांधी का इंटरव्यू है जो इंग्लिश में था, और मैंने आपको ये इंटरव्यू हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके समझाया है। पूरे इंटरव्यू के नीचे मैंने सब टाइटल भी डाल के रखे हैं, और अंत में इंटरव्यू का शॉर्ट मैंने आपको मेरे भाषा में, मेरे आवाज़ में मैंने आपको समझाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा हो तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। लेकिन वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें अगर इतना मोटिवेट मिलता है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना भी ज़रूरी है। बिना लाइक किए मत जाइए, बिना चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइए, ये वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए अगर पसंद आया हो तो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।